America Home presents the News Hour at 10 with Arnab Goswami. But resolute fight of the people of Balochistan. And every time we've had a Balochistan-Pakistan debate, I can tell you the entire country, Tariq Fateh, the entire Republic of India, Ahmad Mustikan, the entire Republic of India comes together in one voice to support you. You are our brothers and sisters, you are part of our beautiful land, and we share so much of our common heritage. Representing the Pakistani side tonight, and I don't know why Shafqat Saeed is smiling, because if he only hears of the brutalities that are being thrown on the people of Balochistan, I don't think that smile needs to exist. In fact, it's a day for mourning. Barrister Zahid Saeed from Islamabad. Barrister Zahid Saeed from Islamabad. 130 people, 1,000 people Barrister Zahid Saeed from Islamabad and Ahmad Raza Kasuri. Ahmad Raza Kasuri. Ahmad Raza Kasuri. Ahmad Raza Kasuri. I have put together all the news reports, and first I would like our Baluch friends. Ahmad Raza Kasuri, आप अगर बोलना चाहे तो पहले तारिक फतेह और अहमद रजा कसूरी को बोलूंगा to start the debate, और उसके बाद मैं बस ये कह रहा हूं that there's nothing to smile or mock, because 21 Baluchis have been killed in the last 15 days, and you should go to Makuran district, Mand city. You should see the houses that have been burned down. And I also want to tell you, in Makuran alone, according to my information, Tariq Fateh, in Makuran alone, 7 people have been hacked to death. And this operation is still continuing. The Baluch freedom fighters were in a clash with the Pakistani army. 2 helicopters were shot down. Different parts of Balochistan, Soran, Nagahi are on fire tonight, and the fight is still on. Representative of RAW, and you take up their causes very effectively. Well done. I don't need your certificate. Alhamdulillah. I don't need your approval. I love it. I work for you ought to you Pakistanis need to really look within on what you are allowing there. It has crossed all lines of inhumanity, Mr. Kasuri. And please here, Tariq Fateh आपको बताएंगे क्या हो रहा है. Tariq Fateh आप बताएं कसूरी जी को क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, आप बताइए. नहीं, कसूरी जी को मैं क्या बताऊंगा. Mr. Kasuri danced the day a Prime Minister of Pakistan was hanged by the military. इनको तो माफ कर दें, जाने दें. But what's happening today, which is my direct reports from Shoran in the Murray Bukti area, is that 80 trucks have entered that place yesterday, along with 6 helicopter gunships, and it's not a question of 10 or 15 dead. My report suggests that at least 100 have died in that adjoining area of the Murray Bukti, jahan there are very crucial part of the place. This is also where Nawab Akbar Khan Bukti had his last stand. Shafqat Saeed. He wouldn't know where these places are now. He wouldn't know. Would Shafqat Saeed know? Shafqat Saeed को तो पता होगा. नहीं, उनको भी क्या पता है. ये दफ्तर के फाइल के कर्नल हैं सर. हाँ, ये इसको बहुत पता है. ये पैगंबर है, इसके पास वही आती है. इसको बहुत पता है. ये अपने आप को तीसमार खान समझता है, और ये समझता है कि दुनिया, the sun rises from his armpit, and he knows everything. He knows bullshit. He doesn't know what is his faith. He doesn't know what he is supposed to be. He is totally misled, man. And he talks only what is fed to him. He is just a loudspeaker. He is nothing more than that. He has no intellect. If he had intellect, he would not have monkeyed himself in the world like this. Where you come from? Yeah. No personal comments. No personal. Don't talk to me like that. You should mind your origin. No, you have lost your origin. I don't know who is your father. You are finding your father. No personal comments. No. At this point, it stops. No. Shafqat Saeed. I want to just tell you this. Shafqat Saeed. Can I tell you this, Shafqat Saeed, that the fact of the matter is. I don't take nonsense. Shafqat Saeed. आराम से बात करने आता हूँ. ये गलत बात करेगा. He will have help from me. He should not talk nonsense. He must know what he is talking. May I say something? Yeah. But Shafqat Saeed once Ahmad Mustikan कुछ कहना चाहते हैं. अभी Shafqat Saeed रुकिए. Shafqat Saeed रुकिए. Ahmad Mustikan आने के आपके बोलने से पहले मैं बस ये कहना चाहूँगा, हमारे जो पाकिस्तानी गेस्ट हैं उनको समझ जाए.
गुस्सा दिखा रहे हैं, गुस्से में हैं। नहीं, पहले जो बलूच, पहले जो MRG 1 मिनट, पहले मैं कहना चाहूंगा कि बलूचिस्तान में जो, मैं तो ये नाइंसाफी नहीं कहूंगा, ये बेदर्दी भी नहीं है, ये मतलब कि ऐसे लोग बिहेव कर सकते हैं। मैं डिटेल अगर बताऊं तो आप नसीराबाद, कलाट, दिलबंद, नगाई डिस्ट्रिक्ट के सारे जो हम रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह से बलोच लोगों को टारगेट किया जा रहा है, these places are being ahmar, they are being mercilessly pounded by the military. This same military which gets a bashing from the Indians every time. This useless Pakistani army. No, 1 second. Shafqat Saeed, suniye. The Baluch people are suffering today, but you will suffer in the long term. I will tell you. You remember in September. आप जगहों के नाम लेकर फिर आगे जो मर्जी आए में बात कर दें, या गलत बात कर रहे हैं आप अपने। मैं आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान में टोटल अमन है, और जो चंद एक बच्चे कुछ रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में सफाया हो जाएगा। Most egregious violations of human rights are happening in Balochistan. It's a full-fledged situation of war crimes and crimes against humanity. They are pursuing a scorched earth policy in Balochistan. In 3 districts of Balochistan, Kalat, Nasirabad and Kesh district, this brutal Pakistan army is repeating the brutalities of Genghis Khan and Halaku Khan. These guys are the criminals of Bangladesh, the butchers of Balochistan and the butchers of Bangladesh. They are one. I have to tell the people of India that the victims of Uri, the widows and orphans, whose tears are still in their eyes. Just the same way, the Baloch women, Baloch children, they have tears in their eyes. These guys who have been invited from Pakistan, this guy is a military bearded mullah, just like you can see, he even looks like Bin Laden. And you can see this guy Ahmad Raza Kasuri, he was instrumental in getting an elected Prime Minister of Pakistan hanged. And he was here in front of the whole wide world threatening me. This is now high time. They want the China-Pakistan endless cheating project to succeed in Balochistan. Who is working against the interest of Pakistan? What they have got, they have got a metro line in Punjab. You are Mr. Harrison from UK. In Punjab. You don't look like a Baloch. Balochistan. I'm sorry, you don't look like a Baloch. Dead bodies, our blood. You're imposter. You're imposter. You're not a Baloch. Where the pins? Where the pins of Punjab? The pins of Punjab. Gwadar is not a pin of Punjab. They must understand that Kashmir does not belong to Pakistan. They are totally isolated today. You have sold yourself to India. You are a raw agent, and you are harping on the tune of India. You are a third-rate character who is working against the interest of Baloch. 3 districts you come out to Balochistan and find out for yourself how peaceful is Balochistan. Yes. Pakistan taught you a lesson. This army We'll teach you again. They must understand. We are Indians. Shut up. You are an Indian. People Except you think you are an Arab who came here on a donkey. You don't look like a Baloch. See. Well, I look like an Indian. That's good enough for me. You look like some Arab who came from Central Asia on a donkey along with Temur. You are their children. You call your missiles Abdali. The people who raped you, you name your children after those people. Shameless. You call yourself foreign. I'm from Central Asia. You call yourself. I'm Afghan. Are you not from?
Yeah, you are from Central Asia. You are from the land of Temur. Disgraceful people. Name your children after Temur. Babar. Disgraceful? What sort of we ruled you. We ruled Yes. you. We ruled you. We Ruled ruled me? you. You were No. our slaves. Of course, You I'm were gonna our hit boot you polishers. back. You were our boot polishers. That's what was you. Wait till where see the our- boot polish our- goes. Ahmad. Wait till you find out where it goes. You know, The Bengalis taught you one lesson, Bramuda and we'll teach you the Bramuda second Bukti lesson. is watching from We were Geneva. very fair with Bramuda Bukti. Hindu population. Bramuda We were Bukti. very fair. Bramuda We had Bukti. Here we made- are. Here we See, are. Raja Man Singh Here we as a are. defense You minister. hang No. Raja Today, Mr. Bukti, I thought that on a program today. Can you bring a Muslim as your defense minister, and a Mr. Muslim Kasuri. as your finance minister? But we did it. See, we brought Raja Man Singh as a defense minister, Raja Todermel as a finance minister. So we were secular, we were liberals. But you believe in Hindu Tava. You believe in Hindu Tava. You are a Hindu. Okay, Tariq Fateh. 1 second, but grandfather was Hindu. You're a Hindu first stupid and man. Hindu last. And your democracy Your is a great-grandfather Brahmin was democracy. Hindu, stupid The Brahmin man. has got different rights. Stupid. Shudra has got different rights. And Kachatri has different rights. And Dalit has got no right. And the problem religious with Ask your great-grandfather who he Can I was. say one thing to Mr. Mr. Kasuri. Mr. Kasuri, I want to say something. Mr. Kasuri, can you hear me? Mr. Kasuri, आपको मेरी आवाज आ रही Let me है? tell you, India is a homeland of scores of sub-nationality. India is going to break up from within. India is going to break up from within. It's just a matter of time. It's just a matter of time. I want to say something to Mr. Kasuri, please. Yeah. Mr. Kasuri, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. A person whose One second, name Mr. is Ahmad, okay, Ahmad, just wait. Mr. Kasuri, I feel so sorry for you that today you have nothing but bitterness inside your heart. There's nothing, you represent the worst of what is there among Pakistanis today. There's nothing. You represent the jealousy and the bitterness of the Pakistani establishment against India. Sir, your mind is hollow and your tongue is full of venom. Your mind, sir, is hollow and your tongue is full of venom. Today, I'm saying this to you, sir, on live television. And telling you that you are the violator of the human rights. You have killed in last 100 days. Now, what I want to say is, what I want to say is to Bramuda Bukti, that Bramuda Bukti, today I would have thought, अरे भाई चिल्ला क्यों रहे कसूरी जी? चिल्लाते क्यों हैं? चिल्लाते क्यों हैं कसूरी जी? बलूचिस्तान वापस नहीं आएगी, 1971 भूल नहीं पाएंगे, और कारगिल में जो आप लोगों को अच्छी तरह से आपके जो आर्मी को चाटा मारा था, वो फिर आपको दर्द फिर से महसूस होगा. इसलिए आप जस्ट समझ लीजिए. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज के प्रोग्राम में मैं चाहता था कि बातचीत उस बात पर हो कि दिन ब दिन कितने बलूची लोगों, भाइयों बहनों को मारा जा रहा है और कितने बच्चों को वहां पे जो बिल्कुल बेगुनाह बच्चे हैं और बेगुनाह औरतें हैं, उनको टैंकों के सामने रखकर उन पे गोली मारी जा रही है. उस पर मैंने सोचा था बातचीत होगी ब्रह्मुदा बुक्ति. But there's no conversation, Mr. Bukti, on that. Instead, I heard with horror a Pakistani guest. No point shouting, Barrister Zahid Said. Today, a Pakistani guest says to a Baluchi that you should be there to polish our shoes. You are there good enough to do a boot polish. This level of racism, Bramuda Bukti, shocks all the people watching across the world tonight. There appears to be no remorse on the Pakistani side, Mr. Bukti. Can you tell our Pakistani friends what the situation is in Baluchistan as we speak, Mr. Bukti? For last 2 weeks, there is a heavy military operation going on. पहले तो शुरू हुआ मकरान में, तुर्बत एंड मंद, एंड पिछले 4 दिन से दिलबंद, बोलान, कलात इन एरियाज में, और कल से चतर, पुलेजी, नसीराबाद, जाफराबाद इन एरियाज में हैवी ऑपरेशन. जो आज सुबह भी यही इंफॉर्मेशन थी कि गनशिप हेलीकॉप्टरों से स्ट्राफिंग कर रहे थे और कुछ फैमिलीज़ को उठा के ले गए, कुछ फैमिलीज़ मंद से, तुर्बत से ले गए हैं, जो आज अभी तक गायब हैं.
और अराउंड 20 to 30 पीपल जो हैं वो उन्होंने उनको मारा है, और इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग थ्रू जेट्स एंड गनशिप हेलीकॉप्टर्स। तो ये सिचुएशन है वहाँ पर। और जनाब शफकत साहब कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो आई थिंक पहले खुद अपनी मालूमात में इजाफा करें। बलूचिस्तान में IGFC का स्टेटमेंट आया कल, वो खुद कह रहे हैं कि ऑपरेशन हो रहा है। तो आई थिंक दे डोंट हैव अ कोऑर्डिनेशन, और सिर्फ ये वही बात करते हैं जो इनको बोली जाती है। मेरे ख्याल में पहले मालूमात करें कि इनके नुमाइंदे वहाँ पर क्या कह रहे हैं, खुद तस्लीम कर रहे हैं कि ऑपरेशन हम कर रहे हैं। तो आई थिंक देयर इज़ नो कन्फ्यूजन ऑन दैट। क्या हो रहा है, कितनी तबाही हो रही है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितना हुआ है, वो उसको छुपाते हैं। पहले से ही उनका वही है कि बताना नहीं है, किसी को वहाँ पर एक्सेस नहीं देना है, एथनिक क्लींजिंग करना है बलूच कौम का। What is your level of credibility? Who is going to listen to you? You are talking nonsense. You have sold your conscience. You have sold your conscience. Balochis don't own you. 10 years Balochis don't own you. So please don't talk nonsense. Nobody is listening to you. एक तरीकाकार रहा है कि बहुत अरसे nobody is believing in you because you have sold your conscience. कि कोई एक दिन में कोई बड़ा if you have anything to do with the Balochis, come to Balochistan. Come to Balochistan. देखेगा तो आहिस्ता-आहिस्ता slow and steady cleansing, ethnic cleansing they are doing. नहीं, ये जो बात हो रही है, अहमद रजा कसूरी, एक मिनट, वो बैरिस्टर जाहिद सईद भी बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ ये पूछूंगा उनको, और जरा आप शांति से जवाब दें। बैरिस्टर जाहिद सईद, ये शफकात सईद है प्रोग्राम में, कहते हैं सफाया कर देंगे अगले कई दिनों में। सफाया कर देंगे का मतलब क्या है? सारे सब बलूचियों का सफाया कर देंगे, मतलब आप पूरा, यू वांट टू डू अ फुल स्केल जेनोसाइड, यू वांट टू हैव अ फुल स्केल जेनोसाइड, right, Barrister Zahid Said? What else do you mean by that? Safaya kar denge. Let me answer. Yeah. Who said this? Shafkat Saeed said it. Shafkat Saeed said it. Bhai, let me say something. I believe that political problems should be settled politically, not by armed forces, like your armed forces in Kashmir. And if our armed forces are doing anything in Balochistan, it is the duty of our institutions to correct it. देखें, आप बात तो सुने ना, बात तो सुने. We are आपकी क्या बात? You are all liars. You are number one liars in the world. और आपके number one liars. Let me finish. Oh, you shut up. Let me finish. You shut up. When there is an allegation, you have to substantiate it. Well, we don't believe this fellow. This fellow's in raw pay. How can I believe him? Certainly, if there is evidence against the excesses of our army, it is our duty to correct it. I'm sorry, but we have to check it and we have to correct it. Not quislings who come and say this and that the other. We have to say, you say homes are looted. We will check whether homes are looted or not. 100,000 Bangladeshi women, institutions of your army Pakistan rape. do not permit this. Do you want to rape? We have not occupied Balochistan. We have not occupied Balochistan. It was exceeded. Balochistan was an independent country. It has every right on our army, on our people, on our institutions, and on our. You don't have an army, you have mercenaries. And I'm sorry, I'm for human rights. Whether it's in Balochistan, Kashmir, Delhi or anywhere else. Besharam, begharat. चुल्लू भर पानी में मरो. And we are kind of whatever scholars. We have here our honorable Braham Dag Bukti, who will be a founding father of an independent Balochistan. Absolutely. These Pakistanis have got absolutely no right to misbehave with the founding father of Balochistan. His grandfather was killed by this army
who is a pro-ISIS army, the pro-Taliban and pro-Al-Qaeda. They are Taliban and Al-Qaeda in uniform. This army is the most serious threat to the peace and stability in the world. They are the enemies of Indian people. They are the avowed enemies of Afghanistan. They are the sworn enemies of the Baloch people. I just want to give the last word. I just want to give the last word. I want to give the last word to Brahmoda Bukti. Brahmoda Bukti मैं चाहता हूं कि आज ये जो प्रोग्राम है ये 80 देशों से ज्यादा में ये टेलीकास्ट हो रहा है। प्रोग्राम खत्म क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, मैं खत्म नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आज आप क्यों डर रहे हैं? मैं बुक्ति जी को मैं ब्रह्मोदा बुक्ति जी को बोलने दे रहा हूं। आपको तकलीफ हो रही है? खत्म करेंगे। आपको तकलीफ हो रही है? आपके पेमेंट किए हुए लोग हैं जिनको आपने खरीदा हुआ है। सुनिए अपनी आपके सुनिए शफकात सईद जी आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी हैं और आपसे मैं कभी सहमत नहीं रहूंगा। आपकी जो बेसिक व्यूज और वैल्यूज है गलत है, कुल बेबस हो गए। और मैं आपको कह रहा हूं आप जैसे पाकिस्तानियों को अपनी थोड़ी सोच सर्चिंग करनी चाहिए। आपने जो इतने पैसे खर्च किए आप जैसे पाकिस्तानियों को थोड़ी सोल सर्चिंग करनी आप लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैं राजस्थान नहीं छुपेगा, मणिपुर नहीं छुपेगा, पाकिस्तान तो गोवा नहीं छुपेंगे, आप गोवा खुद ब खुद टूटेंगे। कब तक आप इनको जोर से ख्वाब आप देखते रहे, ख्वाब आप देखते रहे, उसके बाद आप ख्वाब मैं ख्वाब देखने वालों लोगों को रोकता नहीं हूँ भाई। ख्वाब देखिए आप। मैं सुनिए मेरे लास्ट वर्ड टू Brahmoda Bukti, if people are watching tonight in Balochistan anywhere, any message you have for your people who are suffering tonight, आप क्या कहना चाहेंगे सारे बलूची लोगों को? My message to the people, I have already said so many times कि हिम्मत रखें एंड पाकिस्तान पूरी दुनिया में तना हो चुका है एंड द फ्रस्ट्रेशन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी पैनलिस्ट जो दिखा रहे हैं और जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो ये शुरू से ही इनका एक तरीका कार रहा है कि सफाया कर देंगे, ये कर देंगे। आप अगर 10 साल पहले भी इनका एक इनके जो जर्नल्स हैं वो भी हर वक्त यही कह चुके हैं कि वेरी फ्यू पीपल और हम सब इनको सफाया कर देंगे, ये करेंगे। दे कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट देयर टेररिस्ट एक्टिविटी। सो आई थिंक this fellow who we know is just a propaganda machine. You cannot kill. He's a propaganda machine. ये हमें what do you expect मार कर खत्म नहीं कर सकते और ये इनकी सोच जो है I definitely for sure I do not understand they are speaking propaganda machine. नहीं आप बोलिए वो डर रहे हैं आपसे। मैं कह रहा था कि मैं ये कह रहा हूं कि इनको शर्म आनी चाहिए कि जो अगर ये हिस्ट्री देखें व्हाट हैपेंड इन 65, व्हाट हैपेंड इन 1970, इंडिया के साथ जो हुआ इनका जंग, कितनी जंगें इन्होंने जीती हैं और ये बड़े फखर से कहते हैं, सीना तान के कहते हैं कि हमने इंडिया से जंग जीता है। 65 में जीता क्या है आप जरा बताएं तो सही, जीता क्या है? आप जरा हमारे सामने तो लाएं, अगर हमें पता नहीं है आप बताएं। What you have won in 1965, in 1973, nothing. And this time I am telling you कि ये बलोचिस्तान आजाद मुल्क था और आजाद है। आपकी जबरदस्ती दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से कोई चीज, पूरा पाकिस्तान आजाद है, कौम खत्म नहीं होगी। पूरा पाकिस्तान आजाद है। पाकिस्तान बलूचिस्तान के कि आप जब हमें दहशतगर्द कहते हैं, आप हिंदुस्तान के टुकड़ों पे पलते रहे। बलूचिस्तान बस अपनी शनाख्त बलूचिस्तान बनाया आप। मैं कौन हिंदुस्तान? आपने तो अपना मुल्क बेचा है अंग्रेजों के कहने पर, आपने तो अपना कौम बेचा है अंग्रेजों, सिर्फ ब्रिटिश के बात पर आपने अपना मुल्क तोड़ा है। आप हमें बताते हैं क्या मुहिब्बुल वतनी क्या है और क्या नहीं है।
बिके तो आप हैं भाई। 60 साल पहले आपने ही कहा कि दो कौमी नजरिए पर बना है। आप 2000 सालों से रह रहे थे साथ, अंग्रेजों के इशारे पर आपने अपना मुल्क तोड़ा है। शर्म तो आपको आनी चाहिए। आप शर्म आप करें। आई चैलेंज अर्नब कि अगर आज इंटरनेशनली बलूचिस्तान में अगर रेफरेंडम कराया जाए तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी थिंग। आप लोगों से पूछें कि वो पाकिस्तान के साथ होना चाहते हैं या नहीं, एवरीथिंग विल बी क्लियर। अगर आप रेफरेंडम करा दें सब चीज पता हो जाए, साफ पता चल जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं। मॉरल स्ट्रेंथ नहीं है। लॉजिक तो मैं तो आपको देख रहा हूँ भाई, मैं तो आपको बता रहा हूँ लॉजिक कि अगर रेफरेंडम करा दें, रेफरेंडम इज नॉट अ इलॉजिकल और अनडेमोक्रेटिक थिंग। आप एक रेफरेंडम करा दें, पता चल जाएगा कि क्या। अच्छा ठीक है, आप हमें कहते हैं हम टेररिस्ट हैं। ओके, सो ओसामा बिन लादेन कहाँ से पकड़ा गया, कहाँ मारा गया? मुल्ला उमर कहाँ मारा गया? मुल्ला अख्तर मंसूर कहाँ मारा गया? कहाँ मारा गया है? कैन यू टेल मी? कहाँ मारा गया है? बताइए ना। कहाँ? आपके आर्मी कैंटोनमेंट के पास मारा गया, इस्लामाबाद के करीब मारा गया। 10 बलूचिस्तान का मसला और बना दे हिंदुस्तान, कश्मीर नहीं छुपेगा। कश्मीर में 80,000 लोग गुम हैं, यही उनकी है। कश्मीर में 2.5 लाख 1973 में भी पाकिस्तानी नुमाइंदे एंड पाकिस्तानी मीडिया वाज बिहेविंग सेम कि एवरीथिंग इज फाइन, जंग जीत रहे हैं, बस इंडिया को शिकस्त होगी। एंड देन व्हाट हैपेंड? 1965 लाहौर इनके हाथ से जा चुका था। Okay, Shafkat Saeed, I think they don't. Shafkat Saeed, I have to close this debate. I have to close this debate, but I would say one thing, that I personally, I would apologize to all the Baluchis who have watched a Pakistani panelist say that you are only good enough to clean our shoes. That language today, Tariq Fateh and Ahmad Mustikhan, tells me about the depths of racism that some Pakistanis, I'm not saying all Pakistanis, but some Pakistanis, like Mr. Kasuri, have made a horribly racist comment to all my Baluchis brothers and sisters. I'm sorry for that. More power to the Baluchis, and I think it's a matter of time before that country, Pakistan, breaks up. It's time it does. Thank you very much for joining me. I have to go across to some breaking news now.